सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और अजीज बच्चों, मुक़द्दस और मुहतरम माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के अजीम महीने की बाबरकत साअतों से हम और आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और हम में से हर एक अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल मक़दूर इस कोशिश में अपने शब रोज़ गुजार रहा है कि हमारा रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक हमसे राज़ी हो जाए। ये बड़ी अजीम दौलत है, ये बड़ी अजीम नेमत है जिसके लिए हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए। और रमज़ानुल मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक़ अपने दीन के साथ, इस्लाम के साथ, कुरान के साथ मजबूत होता हुआ नज़र आता है। और हम सब जानते हैं कि इस्लाम की बेशुमार खूबियों में से एक खूबी ये है कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। Islam is a complete code of life. What this basically means is that Islam guides its followers in respect to whatever they may do as a Muslim throughout their life. Islam has rules and regulations for whatever we go through in our lifetime. From the second that we come into this dunya to the second we leave this dunya, Islam gives us awamir and nawahi, do's and don'ts. Islam teaches us. Islam gives us ahkam in regards to every single aspect of our life. ये अलग बात है कि उसका इल्म हमें हासिल न हो, हम फला बात के सिलसिले में आगाह न हो, उसकी रिक्वायरमेंट से हम ना वाकिफ हो, यह मुमकिन है। लेकिन इस्लाम इतना जामे दीन है, इतना कामिल दीन है, बल्कि अकमल दीन है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। Allah says in the Quran, today I have perfected for you your religion. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, and I have completed for you my bounty. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, and I am pleased that Islam be your religion. So Islam is a kamil religion. Islam is a akmal religion. Islam is an all-encompassing religion. Why do I say this? Because brothers, in Islam,
have even the dress code. Libas, which is the zinat and the beauty of a man. Islam gives us rules and regulations in how we should dress, in what we are to wear, in what we are not to wear. And Allah mentions the libas as one of his ayat in the Quran Majid. Thousands of ayat, millions and billions of ayat of Allah. And Allah says, even this libas that I have granted you, ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. This is from the sign of Allah. अल्लाह की बेशुमार निशानियों में से एक निशानी अल्लाह ने लिबास को करार दिया. अब लिबास देखें, अल्लाह इसके मुताल्लिक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है. हमारे मोहतरम कारी साहब ने कल जो तरावी की नमाज में सबसे पहली आयत पढ़ी थी वो इसी के मुताल्लिक है. अल्लाह कहता है, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासा युवारी सौआतिकुम वरीशा. O sons of Adam, indeed we have sent down upon you a garment which covers your shameful parts of the body and it gives you beauty. ذَلِكَ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. And the libas of the taqwa, that is the most beautiful, that is the best libas. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. This is from the signs of Allah so that you may take a lesson. So look at this ayah of the Quran Majid. Allah says, and He addresses not only the believers. The command is not only for the people of Iman. Ya Bani Adam, O sons of Adam, believers and non-believers. This ni'mat of Allah in the form of libas is for all the progeny of Adam alayhi salam. Ya Bani Adam, qad anzalna alaykum libasa. Inzal. Inzal, as you know brothers, means for something to descend. किसी चीज का नाजिल होना, ऊपर से नीचे आना. जैसे हम कहते हैं वही कुरान पाक नाजिल हुआ. इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून. So what does it mean? When Allah says, we have sent down the libas for you from the heavens. Does the libas come from the heavens? The libas that we are wearing comes from the earth. Cotton, wool, other material, leather, from animals. What is it that Allah is saying to us? قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا. Because the sabab of the produce of the libas is the rain. The rain grows. Whatever grows on the earth. So because the rain comes from the heaven, the rain descends. Therefore Allah mentions the sabab of whatever you are wearing. Every garment that grows, the cause of that is the descending of the rain. قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا. Now Allah says, why? What is the function of the libas? What is the purpose of the libas? Number one, yuwari sawatikum. That it covers your shameful parts of the body. तुम्हारी शर्म की चीजों को छुपाता है.
first and foremost reason for clothing ourselves in the light of the Quran is to cover yourself, your body, satare aurat, which is a must for a man from the navel to the knees. For a woman, the entire body is her aurat. तो अल्लाह कहता है हमने लिबास को नाजिल फरमाया ताकि तुम अपनी शर्म की चीजों को छुपाओ, इस लिबास से उन्हें ढांको। वरीशा, और हमने लिबास इसलिए नाजिल फरमाया कि तुम आराइश हासिल करो, खूबसूरती इख्तियार करो, is to give you beauty, give you zinat. So Islam says that we should dress in a way where the entire body is covered as far as possible and covered according to the teachings of Quran and Sunnah, not according to the country that you live in, where people are naked and even then they say we are covered, we are dressed. And this is one of the signs of Qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says there will come a time when women will be dressed yet they will be naked. कासयातिन आरयातिन, लिबास पहने होंगी लेकिन हकीकत में गोया के नंगी होंगी. Allah is telling us, you clothe yourself, you use this ni'mat of Allah to cover your body. Loose clothing. And you should dress so that your dress code shows to the people that you are a Muslim. इंसान अपने लिबास से ही पहचाना जाना चाहिए. आज कितने अफसोस की बात है कि अगियार, काफिर, वो अपने लिबास से पहचाने जाते हैं, वो अपनी शनाख्त को बाकी रखे हुए हैं. आप देखें, सिखों को देखें, always proud of their turban. They boast it, they want to show it. And now they have even passed it by the government that they can wear it even at workplaces. And we, who are Muslims, alhamdulillah, followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and our Nabi alayhi salatu wasalam is undoubtedly the best example for all man for all times. And he has given us a libas code. You know about the Amama Sharif? The turban? He says, sallallahu alaihi wasallam, alaykum bil amaim. अपने ऊपर अमामे को लाजिम कर लो, इसलिए कि this is the crown of the malaika. The Amama Sharif is the crown of the malaika, and it is the sunnat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So brothers, we should dress in a way, and especially our sisters, our mothers, our daughters, because as a husband I am in charge of them. As a husband you are responsible for them. If you let them loose, if you let them free, if you let them dress as they want according to the society and the culture, Allah will question you. You are responsible, you are in charge. Qu anfusakum wa ahlikum nara, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Each one of you is a shepherd. And on the day of judgment, Allah will question each and every one of you regarding his herd. So your wife, your daughters, your sons, you are responsible for them. So लिबास ऐसा पहनो कि लिबास से पता चले कि ये मुसलमान जा रहा है, ये मर्द या ये औरत, ये खातून, ये मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह. और लिबास, सुभान अल्लाह, जब आप इस्लामी लिबास पहनेंगे आप उसकी बरकत देखेंगे, आप उसके फवाइद खूब नोटिस करेंगे. बिकॉज यू कैनॉट बीट इस्लाम. Islam cannot be battered.
whatever rules Islam has given us in any respect, they are simply the best. When you wear Islamic libas, people will automatically know you are a Muslim. ऐसा ही है ना? If you're wearing your jeans and your t-shirt and whatever else you wear, and you got no beard, you look nothing like a Muslim. What's going to tell the world you're a Muslim? But if you have a mashallah Dari Sharif, you are wearing a topi Sharif, you are wearing amama Sharif, you are wearing more libas according to Islam, the onlooker will automatically know you're a Muslim. I'll give you an example of this. What is the ruling when two Muslims meet? That you say salam to each other and try to be the first one to say the salam. Don't wait for your brother. The one who says salam first gets much more sawab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Then let the brother reply. But to say salam, when you meet, you have to know this brother is a Muslim or not. Nothing is written on your forehead. Your name is not there. Your Islam is not there. What will show someone that you are a Muslim? Even the libas works wonders in this respect. The Dari Sharif plays a very big role. When I used to teach in Jamia Al-Karam, 1995-96, about 20 years ago now. It's in Radford, a small city in Nottinghamshire. And there's hardly any Muslims there. Very few Muslim families. One day I was shopping. I came across an Asian brother. I could tell he's an Asian, and that's all. He had never seen me before this. I had never seen him. When we crossed each other, I knew the barakat of saying salam. I know the sawab of saying salam, but I didn't. I didn't say salam to him. When he saw me, at once he says, Assalamu alaikum. I replied, Wa alaikum assalam, and I knew this is a Muslim brother. Then I thought to myself, why did I not know that he's a Muslim? And how did he know I am a Muslim? Think about it. The libas, the Dari Sharif, the appearance. The libas plays such a great role. Libas ने उसे बता दिया. मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरा नाम मोहम्मद अरशद मिसबाही है. मैं मुसलमान हूं. मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी. उसको जरूरत पड़ी क्यों? कि उसलिए कि उसका जाहिर किसी तरीके से भी ये बात का इजहार नहीं कर रहा था कि ये मोमिन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई. कैसे पता चलता? There was nothing about him. My libas told him. My Dari Sharif probably told him. Maybe my topi told him I am a Muslim. So that's the function of libas. Allah says, युवारी सौआतेकुम. लिबास इसलिए पहनो कि तुम्हारी शर्म की चीजें छुपी रहे. टाइम बहुत कलील है. मैंने अभी जाना है, टीवी पे भी जाना है. अभी देखिए हम नमाज पढ़ते हैं. कितने अफसोस की बात है कि हम अल्लाह के घर में हाजिर होते हैं लेकिन तैयारी के साथ नहीं आते. हमारे बहुत से भाई इस लिबास में आते हैं कि जब वो नमाज पढ़ते हैं तो बेसतरी होती है. पीछे जो खड़ा होता है उसके जिस्म का एक एक अंग नजर आता है. खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ले मस्जिद. Allah says in that very same ruku, take your beauty for every salat. Prepare yourself. दुनिया के सामने जाते हैं, किसी ऑफिसर के सामने जाते हैं, किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं, कितने बन ठन के जाते हैं, कितनी तैयारी के साथ जाते हैं, कितना एहतमाम करते हैं. हम पहले लिबास देखते हैं, टाई देखते हैं, 3-piece सूट देखते हैं. अल्लाह के हुजूर आते हैं कुछ नहीं. खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ले मस्जिद. Adorn yourself, prepare yourself, get yourself ready whenever you come one to one with Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Jameel wa yuhibbul Jamal. Allah is Jameel and Allah loves beauty. Allah loves
अब हमारे बहुत से भाई माशाल्लाह दाढ़ी शरीफ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात है, बहुत बड़ा जिहाद है, मैं समझता हूं। इस मुल्क में दाढ़ी शरीफ रखना बहुत बड़ा जिहाद है। मैं ऐसे भाइयों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने शरी दाढ़ी रखी है, शरी दाढ़ी, न जिसको दाढ़ी कहा जाए वो दाढ़ी नहीं है, शरीयत की दाढ़ी, यकमुश्त, फुल बियर्ड। लेकिन दाढ़ी का भी इस्लाम में एक लिमिट है। कई भाई हमारे मुसलमान यहां तक छोड़ देते हैं, they just let it loose, let it go. That's not Islam. That's not the Sunnah. The Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is yakmusht, one fist, then you cut it. That's Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's way. Beauty in your zahir and in your batin. So wear the libas so that your body is covered according to Islam. Warisha, wear the libas for beauty. And then subhanallah, look at the ayat. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. The best libas is the libas of taqwa. Libas of taqwa, of piety, of obedience, of iman, of a'mal salihah. बहुत से लोग लिबास पहन के भी नंगे हैं, और मोमिन, even though he doesn't have enough to cover himself, he has the libas of taqwa, which is the best of all libas. Wear the libas of taqwa 24/7. Libas of taqwa, obedience of Allah. Libas of taqwa, libas of iman. Libas of taqwa, libas of salat. Libas of taqwa, libas of fasting. This is, Allah says, ذَلِكَ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. That is the best libas. तकवा का लिबास पहनो। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।